Hi students, let us continue the story. The rat trap seller woke up in the next morning, but the iron master realized the truth. What was the truth? He realized that the rat trap seller was not his friend. What does this mean? Rat trap seller सब कुछ बता रहे सर मेक rat trap seller. Then must became very angry. ठीक है चलो तुम बस हो गया निकल जाओ. मैं ये सोच रहा हूं to call a policeman to say something about this matter. इतने में rat trap seller की became very angry. मालिक से बोला अबे मालिक मैं अभी आपसे बात कह रहा हूं. The whole world is like a big rat trap. All the good things that are offered to you are cheese rice and a piece of pork to trap a poor fellow into trouble. ठीक है पुलिस आएगा कोई बात नहीं. You should remember a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork. तब तुम भी उसमें फंस जाओगे. यह सुन के आयरन मास्टर जोर जोर से हंस रहे. फिर बोला That was not so badly said, my dear fellow. Hey, my dear friend, तुम बुरा तो नहीं बोला. ठीक है. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. मेरा दोस्त है शरीफ, ठीक है. मैं अकेले उनको बुला दूंगा क्रिसमस ईव के लिए. But now, get out of here as fast as you can. जितना जल्दी हो सकते निकलो उधर से. But just as the man was opening the door, rat trap seller जाने के लिए दरवाजे के पास आ गया. As he was about to open the door, the daughter said, Papa, I think he ought to stay with us today. Papa, I think he should stay with us today. आज इनको हमारे साथ रुकना चाहिए. I don't want him to go. मैं ये नहीं चाहती that he should go. And with that she went and closed the door. ये रात ट्रैप सेलर को जाने नहीं दिया, दरवाजे बंद कर दिया. What in the world are you doing? तुम ये क्या कर रहे? The headmaster the daughter stood there quite embarrassed, troubled, and hardly knew what to answer. She did not know what to answer. उनको पता नहीं था पापा से क्या आंसर बोलना. That morning she had felt so happy. उस दिन इतना खुशी थी. When she thought how home-like, घर का माहौल आ गया. How Christmassy, the atmosphere of a Christmas. She was going to make things for a poor, hungry, wretch. एक गरीब, unfortunate आदमी के लिए खाना बना रही. घर का माहौल अभी आया. क्रिसमस का माहौल अभी आया. देखो मैं खाना बना रही हूँ एक गरीब, unfortunate आदमी के लिए. She could not get away from the idea all at once. एकदम ये idea से बाहर आना she did not like. That is why she had intercede करना, intervene on the behalf of another. किसी के लिए बीच में आके बातें करना, रक्षा करना, simply save. That is why she had interfered for the vagabond आवारा. वो आवारा के लिए सपोर्ट करके इसलिए वो लड़की आई. Because that day she was very happy when she realized how home-like and Christmassy that she was going to prepare food for a poor hungry wretch. वो आइडिया एकदम छोड़ना नहीं हो पाएगा. Then Papa, I am thinking of the stranger here, said the younger girl. He walks and walks the whole year long. Papa आप देख लीजिए ये साल पूरा he has no home at all. साल पूरा he walks and walks and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. शायद ये दुनिया में ऐसा एक जगह नहीं है उनके लिए where he can feel at home and he can take rest. Wherever he turns, he is chased away. ये जहां जाते हैं कि लोग उनको भगा देते हैं. All
always he is being afraid of being arrested and cross-examined by the police. ये हमेशा इसी डर में he would be arrested और cross-examined, question over question, अलग अलग क्वेश्चन पूछ के परेशान करना, ये क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस क्वेश्चन करना, कहाँ से आ रहे, क्या है हाथ में, ये क्या है, वो क्या है, सच क्वेश्चंस. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. पापा, मैं ये चाहती हूँ कम से कम एक दिन, उनको एक दिन एंजॉय करने दीजिए with peace with us here. Just one in the whole year. देखो वो भी पूरा साल में एक ही दिन है. The Iron Master murmured, बड़बड़ा रहे, something in his beard. He could not bring himself to oppose her. अपने बेटे को oppose करने का मन उनको नहीं था, इतना तो मन नहीं था. गर्ल कंटिन्यू कर रहे, पापा अब देख लीजिए, it was all a mistake of course, पूरा गलती से हुआ है. She continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come home. जिनको हम घर पे बुला के आने के बाद उनको घर से भगाना अच्छी बात नहीं है, वो गलत बात है. And then I don't think we ought to chase away human being whom we have asked to come home and to whom we have promised Christmas cheer. जिनको हम क्रिसमस की खुशियां ऑफर कर दिया, उनको घर पे बुला के आने के बाद अरे भाग, इसे बोलना गलत है. पापा सुन के बोल, you do preach worse than a parson is a priest. तुम एक प्रीस्ट से ज्यादा बात कर रहे, उपदेश दे रहे. हाँ ठीक है बढ़िया, गुड. I only hope you won't have to regret this. बाद में पछताना मत. ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया. You do preach worse than a parson. ओके मान लिया, लेकिन बाद में पछताना मत. And पापा हाँ कर दिया. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. इनको हाथ पकड़ के टेबल तक लेके आया. Now sit down and eat. Bye. अब बैठ के खाना खा लीजिए. She said, because she could see that her father had given in. She understood that her father had agreed. इसलिए उनका हाथ पकड़ के उधर बैठाया, भैया अब बैठ के खाना खा लो. The man with the rat trap said not a word. The rat trap seller कुछ भी कहा नहीं. He only sat down and helped himself to food. उधर बैठ के चुपचाप खाना खा रहे. Time after time, he looked at the young girl who had interceded him. बार खाने के बीच में बार he was looking at the girl who had saved him. इनके लिए बीच में आके बात किया, वो लड़की को बार देख रहे थे. Why had she done it? ये लड़की ऐसे क्यों किया? What could the crazy idea be? उसके पीछे के आइडिया क्या है? ये भिखारी को बचा लिया क्यों? That was the thinking of the rat trap seller. Rat trap seller, he was asked to go away. लेकिन लड़की आके तुम्हारे पापा देखो सब कुछ गलती से हुआ था. Anyway, I don't think to chase away a human being whom we have asked to come home and whom we have promised Christmas cheer. ठीक है पापा, गलती से हुआ था, कम से कम. He walks every day, and there is probably not a place in the whole country where his welcome and he can feel at home. पापा एक दिन खुशी के साथ माना दे. तुम एक प्रीस्ट से ज्यादा बात कर रहे, ठीक है, बाद में पछताना मत. ये हाँ बोलते ही
ये लड़की डॉक्टर अफसर के हाथ पकड़ के उधर बिठाया, सर आप खाना खा लीजिए। वो चुपचाप बैठ के खाना खा लिया। देन व्हाट हैपेंड? लेट अस सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।